Good morning, students. We know that the refraction of light is the bending of light when it goes from one medium to another medium. Okay. Today we will discuss why it happens, means why the light changes its direction when it goes from one medium to another medium. Okay. Students, did you know what is the speed of light in vacuum? Yes, the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. And the speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. And speed of light in glass is approximately 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. So the speed of light is different in different mediums. Okay, so that's the reason behind the refraction of light. Okay, so we can say that due to different speeds in different mediums, the light also changes the direction of its path. Okay, and the extent of the change in direction that takes place in a given pair of media is expressed in terms of the refractive index. Okay, it means किसी मीडियम में लाइट कितना अपना पाथ चेंज करेगी या अपने पाथ का डायरेक्शन चेंज करेगी या कितना बैंड होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है उस मीडियम के. ओके, सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Refractive index is defined as the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in the medium. Okay, it is denoted by n, small n. So refractive index क्या है? Refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. Okay, it also written as 1 and 2. It means refractive index of medium 2 with respect to 1. Okay, for example, the refractive index of air or vacuum is approximately 1, and refractive index of water is 1.33, and refractive index of glass is 1.52. Okay, we can find out the value of refractive index if we know the speed of light in different medium. Okay, अगर हमें मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट पता है तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 1. ओके, एंड सॉरी 3 into 10 to the power 8 meter per second, and speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so 1.52. It means refractive index of glass is with respect to air is 1.5 approximately. Okay, so on the basis of refractive index we can classify the mediums as rarer medium and denser medium. Okay, so rarer medium, the medium whose refractive index is less. ओके, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है हम उसे रेयर मीडियम बोलते हैं. एंड द डेंसर मीडियम, those mediums whose refractive index is more, जिसका refractive index ज़्यादा होता है उसे हम denser medium बोलते हैं. Okay, for example, the refractive index of air is 1 and the refractive index of water is 1.33. Okay, so the refractive index of water is more than the refractive index of air. Okay, so we can say that water is denser than air. Okay, similarly the refractive index of water is 1.33 and the refractive index of glass is 1.52. Okay, so the refractive index of glass is greater than the refractive index of water. It means glass is denser than water. Okay, and when the light goes from rare medium to denser medium, because air is rare and water is denser. Okay, water is denser than air, so the light ray bends towards the normal when it goes from air to water. अगर ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है. ओके, सिमिलरली
if the light rays goes from rare denser to rare medium, because glass is denser than water, so it bends away from the normal. This is a normal, okay, it away from the normal. और ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी जब डेंस रेयर से डेंसर में जाएगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी जब डेंसर से रेयर में जाएगी. ओके, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ठीक है, इंसिडेंट ऑब्लिकली. नाउ द लाइट रेज इंसिडेंट ऑब्लिकली on the surface of AB. It is a ABCD is a rectangular glass slab. Okay, when the light is incident AB, okay, it means light goes from rare to denser medium. So it bends towards the normal and along QR. Okay, and again at the surface CD, it pass from glass to air. Okay, it means denser to rare. Now it bends away from the normal and along the path RS. Okay, and the ray will form angle E with the normal. Okay, and this angle is known as emergent angle, and the ray is known as emergent ray. Okay, so if the glass slab would not have been there, अगर यहाँ पर glass slab नहीं होती, okay, तो incident ray will travel along the path QS. ठीक है, अगर यहाँ पर glass slab नहीं होती तो इसका original path क्या होता, QS. okay, but now you can see from the figure the light is emergent along the RS. Okay, so glass slab simply shift the incident light. Okay, जो ग्लास स्लैब है वो क्या कर रही है, सिर्फ जो लाइट है उसको क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है. क्योंकि आप देख सकते हैं RS और QS ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस. क्या है, पैरेलल लाइंस. तो ग्लास स्लैब इज ओनली शिफ्ट द इंसिडेंट light. Okay, and this is known as lateral shift. Okay, lateral means sidewise. Okay, so it is a lateral shift, and angle I is equals to angle E. Okay, refraction में क्या होता है, angle I is equals to angle of emergent. Okay, so suppose if a light is incident normally, then what happens, अगर ये light obliquely incident ना होके normally incident होगी तो क्या होगा, there is no lateral shift. ओके, जो लाइट है वो उसी ओरिजिनल अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ओके, देन द लाइट इज इमर्जेंट विदाउट एनी डेविएशन इफ द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब. ओके, विल रिमेंबर दिस पॉइंट because we will use it in image formation. ओके, इसको हम बाद में यूज करेंगे. इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर लाइट इंसिडेंट नॉर्मली होती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन इज रिफ्रैक्टेड. ओके, सो इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल lenses.